such a dynamic, and promising scholar of English studies, bringing out journal, publishing articles. So you are very fortunate to have Professor Yahya as your role model. Please follow in his footsteps for academic excellence and quality education. All right. This evening, I will share with you my observations on this academic leadership with reference to NEP 2020. My dear fellow teachers, yeah, yes, they are comfortable with English or a mix of English and Urdu. यस सर देयर इज नो इशू अगर आप सिर्फ इंग्लिश में भी लें इट इज ओके एंड सिर्फ अगर मिक्स भी कर लें तब भी इन बोथ Right. वेज वी आर कंफर्टेबल Okay. Thank you very much for the clarification. Mostly it will be in English, but some of the seminal concepts I will dwell at these in Hindustani language as well for a better understanding. Right. So all of you have joined an orientation program. First, a word about this orientation. Originally, the word orientation is a derivative of Orient. So originally, Orient is a geographical term. It means the east, the eastern horizon. As opposed to this is the western hemisphere or western horizon, and that is known as Occident, Occident. So Orient is standing for the east, and Occident is standing for the west. But as a metaphor, when we use orientation, this geographical sense is replaced by a general meaning. Whenever we use the word orientation, it means showing a path, showing a way, guiding you to something, leading you to something. That's the idea implicit in orientation. So here is orientation in which sense? What the course coordinator or your institution, they are trying to make you familiar with national education policy. They are orienting you to the aims, objectives, goals, and the underlying spirit of the national education policy. So that is the objective of an orientation program, to take you to a particular direction. And the direction here is, or the goal here is very clear: national education policy. So, my dear young colleagues, uh, I'm sure now you have an idea कि इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपका क्या मकसद पूरा होगा। वो ये है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो आपसे क्या चाहती है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका क्या रोल है, आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आप किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करें, इन सब के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है, you know very well, it is a very important policy document. After years and years of discussion, planning, and feedback, this document finally came out in 2020. And it is a policy document. For several years, it will be in place. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रोल ऑफ टीचर्स का, इसके यूनिट 3 में। और यही यूनिट 3 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
Unit 3 may very significantly, please pay attention to it. All teachers of the higher education system, whether they are from a degree college, PG college, university, or affiliated institution, all of them are designated as academic leaders. Please, once again, listen to this new designation. Teachers, of course, it goes without saying we all are teachers. But according to policymakers in Ministry of Education, UGC, your management, you are now onwards academic leaders. Both the words are equally, our terms are equally significant. When we say academic, naturally it means something related to scholarship, whether publications, teaching methodology, what is known as pedagogy, seminars, presentations, academic qualifications, honors, and everything you know very well related to education is academic. More important is you are perceived as leaders. This is what is your new definition. You are no longer an ordinary teacher, chop, walk, talk, and then go home. पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई, छुट्टी। ये बहुत ही नैरो थिंकिंग है टीचर के बारे में। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपको एकेडमिक लीडर का रोल अदा करना है। एकेडमिक लीडर कौन होता है, उसमें क्या आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज होती हैं या होना चाहिए, वो क्या क्या टास्क करेगा, इसके बारे में ब्रीफली आई विल डिस्कस, and I will discuss according to the rubrics used in the national education policy. The first rubric or term or self-definition is academic leadership. As you know, leaders are someone who move forward, who take you to a goal. What is your goal? Naturally, academic excellence. What is your goal? Best quality education. What is your goal? Delivering the goods according to the satisfaction of all stakeholders. Look, I just didn't use the word students. Of course, students are the basic part of the education system, but education in today's context, 21st century, it is something wider, broader than
a relationship between teacher and student. It involves the entire society, the whole country, and in a sense, across humanity. That's why I use the term stakeholders. One is student, the other is teacher, the third is policy makers, advisors, the other is management, educational management people, whether college management or university authorities. Next stakeholder is parents of students. Next, the regulatory bodies, whether UGC, whether NAC, whether INRF. Next is industry, business, from the point of view of job and placement for students. Next is society. You, as an academic leader, your college, your university is answerable to parliament, to nation for what you are doing, what you should be doing, what you are doing, how are you doing. All these questions are to be addressed, answered. So when we use the term academic leaders or academic leadership, it is something broader. It involves, as we said, not just classroom or your institution, the whole range, social, political, economic, that is involved. Okay, this is one thing you should keep in mind. The next point, which is very relevant, is that when we call teachers as leaders, we should accept that there will be variety, there will be diversity. Teachers are not robots, they are not factory products, that all teachers will be identical, alike in every respect. Rather, they will be unique. Each one of them will have some special, outstanding qualities. But overall, their objective is to provide leadership, to take the educational institution to greater heights, to inspire its students, to motivate learning, to develop critical faculty, to promote critical thinking, to broaden and deepen
the frontiers of knowledge, to contribute to the body of knowledge. This is what the role of an academic leader is. Now, it is very important and relevant that in the National Education Policy Document 2020, under Unit 3, they have identified Ministry of Education and UGC. They have identified 5 qualities in an academic leader. Each one of you, whatever be your subject, whatever be your institution, again, I am emphasizing that it is not only for the university teachers or for PhD teacher, PG teachers, for everyone. Every teacher must display at least these 5 qualities. This is what I am now going to focus on. After having discussed academic leadership, who is an academic leader, what is his role, what is his mandate, let me now focus with reference to the policy document on the 5 qualities which each one of you must embody. This is not to say that you don't have these qualities. Most of you already have these qualities. But even if you have these qualities, there is always room for improvement, betterment, self-development. So let us see what are those 5 qualities which are expected of you, which may make you builders of the nation, which may qualify you as architects of modern India. The qualities which will help your institution become a top ranking institution. What are those 5 qualities? The first and foremost, Dr. Yahya will be gratified with that because he is a teacher of language, not necessarily English. I use the word language, any language, Hindi, Urdu, English, Odia, Magadhi, Bengali. The first and foremost quality in a teacher for every teacher is communication. No teacher can be effective, successful, fulfilling if he or she does not possess communicative skills. Communicative or presentation or soft skills, whatever technical term you use for that. Communication. Look here. Now, what I'm going to discuss with you applies to both spoken and written forms. Communication does not always mean speaking to someone. Writing and writing of all types
from your chat in social media, your comment, to a full-length book published by Routledge or Macmillan, 300, 400 pages book. That's communication. Of course, the written form of communication. Likewise, speech, whether for yes or no, nodding, or a class lecture of 60 minutes, a seminar paper of 30 minutes. All this is communication. So by definition, communication has two qualities. One is, look at the word communication, C-O-M. Generally in English, whenever we have a word with C-O or C-O-M, it means together, join, cooperation, collaboration, communication, co-option. So communication presupposes the other. Look, whenever I am communicating, it is taken for granted that somebody else is also there. That is a very important consideration. Communication is not for only yourself. It is for someone. Who is that someone? We will just discuss. This is one point. Another point about communication is it covers both spoken and written varieties. Language is no bar. जो बातें देखिए भी मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक अंग्रेजी से भी है, बंगला से भी है, हिंदी से भी है, उर्दू से भी है। किसी भी भाषा में आप कम्युनिकेट करें तो प्लीज चंद बातों को ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, और कम्युनिकेशन अगर आपका बेहतर होगा देन यू विल बी अ बेटर टीचर. You will perform the role of an academic leader. कम्युनिकेशन के बिना गाड़ी नहीं चलेगी. Very clear idea of communication. Communication is something, it is a serious business. कुछ भी बोलने से पहले, लिखने से पहले सोच लीजिए. जबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता. It has its impact, good or bad. It may be successful or it may bring embarrassment to you, humiliation to you. Sorry, you may feel ashamed. So please think before you communicate. जैसे आप सड़क क्रॉस करते हैं उससे पहले दाएं बाएं देख लेते हैं, ऐसे ही कम्युनिकेट करने से पहले, कुछ कहने से पहले, कुछ लिखने से पहले दाएं बाएं देख लीजिए, सोच लीजिए.
समझ लीजिए, परख लीजिए। ऐसा करेंगे तो आप कामयाब हो। पीपल विल respect you. People will take you seriously. Otherwise, you will be a laughing stock. People will consider you as someone or abnormal. अभी देखिए, मैं आपसे बात करता हूं। आप 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर, आप स्कूल में रहे, फिर कॉलेज में रहे, फिर यूनिवर्सिटी में रहे। इतने सालों में आपको कम से कम मिनिमम 100 टीचर्स मिले। कितने के नाम याद हैं आपको? 4, 5, 10? क्यों याद हैं? जो वो पढ़ाते थे, बताते थे, समझ में आया, दिल में, दिमाग में बैठ जाता था। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। 70s में हाई स्कूल कर रहे थे हम, 9th क्लास में पहली साल ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मैथमेटिक्स ऐसी मुश्किल सब्जेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री नया सब्जेक्ट था, पहले साल था, बड़ा लड़के डरे हुए। पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी जो थे, वो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे। पंडित जी आए और उन्होंने बोर्ड पे लिखा, ध्यान से सुनिएगा, ये साहब वेरी इंटरेस्टिंग। बोर्ड पे लिखा, पहली लाइन लिखी, पंडित स्पेस छोड़ी, बदरी प्रसाद स्पेस छोड़ी, एक लाइन खींची, पंडित नीचे लिखा, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर की लाइन में नीचे लिखा, और नीचे की लाइन में लिखा, हरि हर बोले। हम लोग सोच रहे हैं क्या हो गया है माँ साहब को, ट्रिग्नोमेट्री इनको पढ़ानी है, क्या लिख रहे हैं बोर्ड पे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोले। कोई श्लोक लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट उनका था, ये पी जो है पंडित का, ये है परपेंडिकुलर। बद्री का बी जो है, ये है बेस। प्रसाद फिर परपेंडिकुलर, हरिहर ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच कॉस टी था, साइन टी था। बिल्कुल जो उसके फंडामेंटल्स थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो 6 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो उन्होंने एक मंत्र से पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले। इस बात को 50 साल हो गए, देखिए मुझको पक्का याद। आज कहे मैं आपके बेटे को ट्रिग्नोमेट्री 5 मिनट में समझा दूं। दूसरी एग्जाम्पल सुने। इंग्लिश तो मैंने मास्टर्स में ज्वाइन किया, पहले मैंने केमिस्ट्री से बीएससी किया। वहाँ हमारे प्रोफेसर थे तिवारी, फिजिकल केमिस्ट्री। 75 में पढ़ाई हुई थी, आज 2025, अनदर 50 years। 1975 में, उसके बाद से मैंने आज तक कभी केमिस्ट्री की किताब छुई नहीं, मतलब ही नहीं रहा। इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश में एमए किया, पीएचडी किया, पढ़ाने लगा।
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिस तरह से पढ़ा दिए तिवारी जी ने, पत्थर की तरह लिखे। कोई साहब केमिस्ट्री के हो यहाँ, उससे डिस्कस कर लें। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जी। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, पूरी जो टर्म्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, जैसे लगता है पत्थर की तरह माइंड पे लिखी। ये किस चीज का कमाल था, ये भी मैंने दो मिसाल एग्जाम्पल्स आपको दी अपने पंडित जी की, प्रोफेसर तिवारी की। कैसे हुआ उनका पढ़ाने का अंदाज, ऐसा था कि दिल को छू ले, दिमाग में बस जाए। और ये कैसे होता है, ये कम्युनिकेशन से होता है, कम्युनिकेशन एबिलिटी से होता है। इसका ताल्लुक देखिए, लेट मी क्लैरिफाई, इसका ताल्लुक एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं होता, इसका ताल्लुक पब्लिकेशन से नहीं होता। मैं हार्वर्ड से पीएचडी हूँ, 50 मेरी किताबें हैं, 10 मुझको एकेडमिक डिस्टिंक्शन मिले, वंडरफुल, अमेजिंग। But if I cannot express myself before my students, all these qualifications are worthless, pointless, meaningless. Why? The student is there to follow the fundamental concepts. यह साहब अगर उसको ये डिफरेंस नहीं बताते कि सोनेट क्या होता है और लिरिक क्या होता है, एलिजी क्या होती है, जी यूलोजी क्या होती है, मीटर क्या होता है, वो कभी भी लिटरेचर का अच्छा स्टूडेंट बन ही नहीं सकता। और उसने अगर एक बार आपके यही साहब से समझ लिया, अब उसको यही साहब की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही अपने माने निकाल लेगा कि सोनेट, जब वो समझ गया कि लव पोएम होती है, इट में डील विद डेथ और इट में डील विद दिस, या एलिजी जो है इट इज टू मोर्न समवन, देन ही और शी इज लाइकली टू मेक आउट द मीनिंग आउट ऑफ इट। क्यों, क्या कमाल है इनका, इन्होंने फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर कर दिए, उसको मार्गदर्शक उसके लिए बन गए। उसको आगे चलने का, कोई बच्चे का है, उंगली पकड़ ली आपने, वो जैसी उसके पैर 4-6 कदम के बाद स्टेडी हो गए, चलने लगा, अब उसको आपकी उंगली की सहारे की जरूरत। कल वो आप बूढ़े होंगे, आपकी उंगली पकड़ के आपको कनाडा ले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, इंग्लैंड ले जाएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। So you empower your students if you communicate well the concepts, the basic idea. फिर वही बात आती है कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। That's what I am going to share with you. Please try to get the point. अगर आपने ये मंत्र समझ लिया, ये गुण समझ लिया, you will be a highly successful teacher. You will be admired by everyone, not just your students. Whoever meets you will be impressed by you, will consider you as an outstanding person. तो जब भी कभी आप बोलें या लिखें, पहली बात तो ये ध्यान से सोच लें कि सिचुएशन क्या है।
सीन क्या है, सेटिंग क्या है, इन शॉर्ट वेयर आर यू। वेयर से मतलब ज्योग्राफी नहीं है कि आप वो माल पे खड़े हुए हैं कि क्लासरूम में खड़े हुए हैं। सोशली वेयर आर यू, इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स, facing your students, having a meeting with your principal, where are you? या घर में है, in the company of your family। और जैसी सिचुएशन, जैसा सीन हो, जैसी सेटिंग हो, उसी तरह की बात करें, उसी लेवल की बात करें। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा, लोग आपको सनकी समझेंगे, एबनॉर्मल मानेंगे। क्यों? मौका, सिचुएशन देख के आप बात नहीं कर रहे हैं, then no one will take you seriously. They will think you are abnormal। और तो पहली बात जो ध्यान रखें ये, बोलने से पहले ये असेस कर लें या लिखने से पहले कि कौन, वेयर आर यू। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका, आपके सामने कौन है। पहले कोई इंसान ही होगा, एक है या कई है। नंबर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वन टू वन जब बात करते हैं उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। One to many, when you are addressing a group, then communication is different. But more important is, what is your equation with them? Who are they? Your superiors, your equals, your juniors or subordinates। जिस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे अपने प्रिंसिपल से, उस तरह से आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने 7 साल के बेटे बेटी से। अपने बेटे बेटी से जिस तरह का आप शब्द प्रयोग करेंगे, वो अपने स्पाउस से जब बात कर रहे हैं आप, तब नहीं करेंगे। और जब पूजा का समय होगा या नमाज में पढ़ूंगा, ए डिफरेंट लैंग्वेज, वो लैंग्वेज भी नहीं होगी, वो ये आप बेहतर समझते हैं, दैट इज मेटा लैंग्वेज, हार्ट टू हार्ट। उसमें वर्ड्स जो है दे लूज देयर मीनिंग, दे लूज देयर वैल्यू। वो तो दूसरी दुनिया होगी, चलिए उसको भूल जाइए, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये पहले तो आप अपने इस सवाल का जवाब दीजिए, वेयर आर यू, और नेक्स्ट इज हु इज दैट पर्सन और पर्सन्स। जैसा आदमी वैसी बात। टैक्सी आपने हायर की, टैक्सी वाले से जो बात करेंगे, जो आपका अंदाज होगा, आई एम नॉट सेइंग you have to be rude or ill-mannered, but it will be business-like. But when you are talking to your life partner, husband or wife, it will be different। हर चीज बदल जाएगी, टोन बदल जाएगा, वर्ड का चॉइस बदल जाएगा, एक्सेंट बदल जाएगा, जेस्चर्स बदल जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। एंड इफ यू डोंट डू इट, you will not get the result which you want। तीसरा प्रश्न जो आप अपने आप से करें इससे पहले कि कुछ आप बोले, कुछ लिखें,
इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हाई। आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आप बात कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? रिक्वेस्ट है, कमांड है, जोक है, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन है, मेनी थिंग्स। Language has thousands and thousands of functions. It could be any function. Important thing is, in your mind, you should be clear what you want from the other person जो सामने वाला है, उससे आपको क्या चाहिए। छुट्टी चाहिए प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल इज योर सीनियर, ही इज योर सुपीरियर, सो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। बच्चे से आपको पूछना है उसका स्कूल में दिन कैसा गुजरा, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। So, my dear fellow teachers, my request to you is pay special attention to communication। और कम्युनिकेशन में भी ये तीन बातें जो मैंने आपसे कही, आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए, वेयर आर यू, who is the audience, and why are you communicating? If you keep that in mind, आपकी बात में वजन होगा। It will have an aim, उसमें क्लैरिटी हो। ये बात एक और कह दूं, कम्युनिकेशन की बात तो मैं कह ही रहा हूं। डॉक्टर नुजरत, are you with me? I can see your name. I have a small mobile, so I cannot see everyone's name. Dr. Nuzhat, are you following me? Anyway, the point is that जितना आपका माइंड क्लियर होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट। यस, डॉक्टर सुनीलवा, हाउ आर यू डॉक्टर सुनीलवा? जी yes sir. Are you with me? Are you following what we are talking about? Yes sir. Okay, great. What is your subject? What do you teach? सर आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन सही तरीके से करना कितना जरूरी होता है? Okay, that's I'm asking about your interest. Your आपका सब्जेक्ट क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट में है? आप किस डिपार्टमेंट में है? सर मैं बीए डिपार्टमेंट में हूँ। Okay, fine. Right. You are spot on and you said that कि टीचर के लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है। और ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की तरकीब ये है कि अपना पूरे माइंड को ट्रेन करें। जितनी क्लैरिटी होगी थॉट में, जितना क्लैरिटी होगी, उतने ही सक्सेसफुल आप टीचर होंगे। डॉक्टर यही आपने इनसे प्रोफेसर मसूद हसन साहब थे आपके जमाने में या रिटायर हो चुके थे? सर वो रिटायर हो गए थे, बट हम लोगों ने उनका लेक्चर वगैरह सुना है सर।
और मकबूल मकबूल हसन खान को सुना है आपने? मकबूल सर तो हमारे उस्ताद ही थे सर, उन्हीं के जमाने में हम पीजी कर रहे थे जब ही वाज द हेड। So you see what was the best about this Maqbul Hussain Khan? Clear-headed person. He was only an MA. He was not even a PhD. He was an MA, but one of the best teachers I have ever met in my life. Why? दो qualities थी, which Dr. Ibrahim will also agree. One was this clarity of thought, and the other was, जिसको टेक्निकल वर्ड है, elusiveness, dropping hints. पढ़ा रहे हैं शेक्सपियर, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, और एक जुमला उन्होंने टीएसी गेट के बारे में कह दिया, एक जुमला चौसर के बारे में कह दिया, एक जुमला जो है वो उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कह दिया, सब रिलेटेड। अब देखिए आपका मेंटल होराइजन जो है कितना ब्रॉडेन हो गया। एक फ्रेंच का उन्होंने टर्म यूज कर दी, डबल इंटेंडरे, और उसके माने बता दिए। पढ़ा रहे शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म एंड ओपनिंग अप द एंटायर, जितना पॉसिबल हो सकता है, द एंटायर स्कॉलरली कैनवस बिफोर यू। सही है इब्राहिम साहब बात की नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो टीचर का ये कमाल होता है, और ये कमाल कैसे आता है? जब उसके खुद अपने कंसेप्ट क्लियर हो। मैं फिर वो बात कहूंगा कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके लिए ढेर सारी डिग्री हो, ढेर सारी किताबें, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेन चीज है एबिलिटी टू पुट अक्रॉस योर आइडियाज इन अ वे दैट योर स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इट। उनके लेवल पे अगर आपने आके बात नहीं की, हवा में आपकी बात चली गई, कुछ नहीं, उसको मौका मिलेगा तो फिर वो दोबारा भी क्लास में भी नहीं आएगा। लड़के से, स्टूडेंट से बेहतर कोई जज नहीं होता। उसकी नॉलेज लिमिटेड होती है, लेकिन उसके अंदर डिसर्नमेंट की क्वालिटी होती है, असेसमेंट। 10 मिनट में वो अंदाजा लगा लेगा कि आप कितने पानी में, एंड इफ ही और शी realizes that you are sincere, you are serious, you have depth of knowledge, वो जान दे देगा आपकी। Right. So please make sure that your communication abilities develop, they are improved. आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, ऐसी जनरेशन में हैं, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के so many apps are there which can help you in improving your accent, delivery, vocabulary, grammatical concepts। हम लोग तो किताब से रट के जाते थे, आपको सब बेहतरीन एट्रैक्टिव फिल्म की फॉर्म में सब मटेरियल मिल जाता है। ओनली थिंग विच इज नीडेड इज कमिटमेंट, राइट। तो देखिए, एक तो ये क्वालिटी हो गई कम्युनिकेशन। द सेकेंड क्वालिटी इज एम्पैथी, EMPATHY। संस्कृत की तरह इंग्लिश में भी वर्ड्स आए हैं दूसरी लैंग्वेज के, और डेरिवेटिव्स हैं, सब प्रीफिक्स सफिक्स लगा के नए नए वर्ड बनते हैं। तो ग्रीक वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स।
उसमें हमने सिम लगा दिया, SYM सिम, मोबाइल वाला सिम नहीं, ये इंग्लिश वोकेबलरी का SYM सिम. सिम मीन्स सेम. Your friend's mother died, he said. You are also sad. That is sympathy. Someone stole your bike. You are angry, upset. You have antipathy for the thief. Anti, opposite, negative. ये तो हो गया antipathy, sympathy. Now the word which is used in the policy document is empathy. EMPATHY. ये क्या होता है? इसकी दो एग्जाम्पल्स आप सुन लें. एक एग्जाम्पल है हमारे महात्मा गांधी जी की. इंग्लैंड से लॉ का कोर्स करके आए. साउथ अफ्रीका में एक गुजराती बिजनेसमैन था, उसका केस था. उसने केस लड़ने के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया 1910. साउथ अफ्रीका की क्या कंडीशन है 1910 में? 99% पॉपुलेशन जो है ब्लैक लोकल पीपल, लेस देन 1% whites. They are the rulers and they are treating 99% black people as worse than animals. Black people cannot enter railway compartment. They cannot visit a park. They cannot go to any public place. Who is Gandhi ji? He is not South African. He is not black, but he protested against this inhuman treatment. Sympathy for other person whom you don't know, that is empathy. दोस्त के साथ आपने हमदर्दी कर दी तो कोई खास बात नहीं. जो आपका अपना नहीं है उसके लिए भी एक लव, अफेक्शन, टेंडरनेस, इसको कहते हैं एम्पैथी. दूसरी एग्जांपल सुने, दैट इज आल्सो वेरी टेलिंग एग्जांपल. हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे. हमारे जो फाउंडर थे सरसीद अहमद खान, उनके ग्रैंड सन थे. उनका नाम था रॉस मसूद. इंग्लैंड पढ़ने गए वो. वहाँ उनकी दोस्ती हुई एक इंग्लिश मैन से, जो इंग्लिश के स्टूडेंट टीचर्स यहाँ इस वक्त मौजूद हैं. They will immediately recognize he was E.M. Foster, Edward Morgan Foster. He was a British novelist. After Ross Masood came back to Aligarh, he was appointed Vice Chancellor of the Aligarh Muslim University. He invited Foster to India, 1920. What is the situation of India? Only 0.1% white British and 99.9% Indians. They are suffering. Only 1 year ago in 1919 in Amritsar, Jallianwala Bagh, at the command of General Dyer, thousands of innocent, helpless Indians killed. E.M. Foster went to many places in India. He was a creative writer, artist. He watched Janmashtami festival with great interest. He visited Jame Mosque in Delhi, Hyderabad, Aligarh, Bhopal. On return to England, he wrote a masterpiece novel, A Passage to India. Look,
Ian Foster is a white Christian Englishman, nothing in common with Indians who are brown, who are Hindu or Muslim or Sikh. In his novel, he condemns the white British officials for their exploitation of Indians. He praises the Indians, Indian customs, traditions, buildings, historical places. What is this? Another example of empathy. Why? What about you? Why NEP is talking about empathy for teachers? Look, ours is a multi-religious, multilingual, multicultural, multi-regional, multi-traditional country. You are in Jamshedpur, Jharkhand, East India. There may be a student from Andhra Pradesh, totally different from you in dress, food habits, religion, culture, caste. But you should have the same feeling for him as you have for a local Jamshedpur boy Arthur. That is empathy. देखिए आपकी जो हमारे देश की जो परंपरा रही है गुरु की, जी गुरु की नजर में सब बराबर, सब का सम्मान। इसी तरह जो शिष्य है उनके लिए गुरु की आदर। तो ये जो है शिक्षा जो है, इसमें ये लेबल नहीं देखे जाते। ये जो मेरे सामने बैठा है ये तो बंगाली स्पीकिंग है, अरे मैं तो हिंदी स्पीकिंग हूँ, मुझे इससे क्या लेना देना, क्यों मैं इसकी मदद करूं, क्यों मैं इसको साथ दूं, ये तो दूसरी कास्ट का है, छोड़ ज्यादा दे उसको, अरे ये तो अपना आदमी है, इसको भाई 20 में 12 मिल रहे, इसको 18 दे दो। ये जो प्रेजुडिस है ह्यूमन नेचर में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, इन सबको खत्म करके सबसे ऊपर उठ के लव, अफेक्शन, टेंडरनेस फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाट is the quality of a teacher, of an academic leader. In his eyes or her eyes, everyone is equal, everyone is same, everyone deserves respect. तो ये तो होगी सेकेंड क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी है ग्रेट। ग्रेट, GRIT, ग्रेट। ग्रेट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन, रिजॉल्व जिसको कहते हैं। जो बात आपने ठान ली उसको करके दिखाना है। सेल्फ डेवलपमेंट करना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, अपने कॉलेज को ऊपर उठाना है, इसको डेवलप करना है। जो भी गोल आपने सोच लिया उसको करके दिखाना है।
तन मन धन से उसमें लग जाना, ये होता है कमिट। ये होती है टीचर की शान। ये एक्सपेक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कि आप रिजॉल्व से काम करें, कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ, सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ। नेक्स्ट क्वालिटी है फोकस। फोकस ही वही बात आ गई जो मैंने आपसे भी कही थी, क्लियर गोल्स। यू शुड नो व्हाट टू डू। कहने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो। नैक में रैंकिंग अच्छी होगी, कॉलेज का नाम रोशन होगा, ग्रांट आपको ज्यादा मिलेगी, आपका नाम चर्चा हर तरफ होगा। सो योर फोकस शुड बी A++ or at least A+ रैंक। INRF में अगर आप जा रहे हैं टॉप 50, टॉप 100, फोकस। मैं आपको बता दूं, इत्तेफाक से मुझको इंग्लैंड में रहने का मौका मिला। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू डू a second PhD from England। 1990s में मैंने किया वहां से पहला वाला, तो और पहले जॉब ज्वाइन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त किया। There is a world of difference in the two, with all my love for my alma mater, that's Aligarh Muslim University. Academic standards में tremendous difference। और वो डिफरेंस क्यों है? सिर्फ टीचर्स की वजह से। टीचर्स देयर आर 100% dedicated, sincere, committed। जितना ध्यान हम अपनी नमाज पे, पूजा पे करते हैं, उससे ज्यादा वो अपने प्रोफेशन पे करते हैं जी। तो आज देख लीजिए, हार्वर्ड हार्वर्ड है, और सिर्फ हार्वर्ड का नाम ही नहीं होता, जो वहां से निकल के आती है चीज, मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो चीज निकल के आती है, कल गांव गांव पहुंचती है। दवाएं हैं, गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, किसको फायदा हो रहा है? पूरी ह्यूमैनिटी, 10 बिलियन लोगों। काम 5 आदमी कर रहे हैं लैब में, सुबह शाम, जान दे के। बेनिफिट कौन उठा रहा है? दुनिया उठा। बेटा मेरा एविएशन इंजीनियरिंग में है, बताता है प्रोटोटाइप चल रहा है, वेरी इट विल टेक टाइम। लेकिन यही तरीका है, प्रोटोटाइप चल रहा है एविएशन में, एरोप्लेन इंडस्ट्री में। In 45 minutes you will reach from London to Sydney। अभी क्या है, 18 hours। 18 hours, 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 18 hours,
पहले क्या था, 50 साल पहले जब शिप चलते थे लंदन से सिडनी 6 महीने लगते थे, अब 18 आवर्स लगते हैं। 18 आवर भी हमको आपको बहुत लगते हैं। कनाडा में बेटा है 16 घंटे की फ्लाइट। अब ये साउंड बैरियर को ब्रेक करने पे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए उस पॉइंट पे। Once they do it, London to New York, half an hour. London to Delhi, 35 minutes. वंदे भारत ट्रेन तो आपने देखी, हमारे देश में आ गई जी। मेहनत एक आदमी करता है, फल जो है उसका सबको मिलता है। तो फोकस ऑन हायर गोल्स, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, excellence. This is what is expected. लास्ट क्वालिटी जिसकी बात कही पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो ये है, each one of you should be concerned, careful about institutional development. जी, खुद तो आगे बढ़े, तरक्की करें, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट हो, एसोसिएट से फुल प्रोफेसर हो जाए, प्रोजेक्ट लाए यूजीसी से, आईसीसीएसआर से, एग्रीकल्चर काउंसिल से, जहां से भी जिस सब्जेक्ट के भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस में पेपर लिखे, पूरी दुनिया घूमे, ग्रांट ले इंटरनेशनल बॉडीज से, ये करें, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन जिसमें आप हैं, इस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में है, जिस डिपार्टमेंट में है, उसको भी मजबूत करें, उसको भी आगे बढ़ाएं। क्लीनलीनेस से लेके फैसिलिटीज तक उसकी फिक्र करें। कहने की कोई बात ही नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम से जो आप टीचिंग डिलीवरी सिस्टम है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, वो जितनी बेहतर होती है वो चौक से नहीं होती, व्हाइट बोर्ड से नहीं। स्मार्ट क्लासरूम नहीं है आपके यहाँ, कोशिश की। हमारे अलीगढ़ में गवर्नमेंट ग्रांट देती है, गवर्नमेंट की लिमिट्स हैं, और अगर उसको ग्रांट देना है तो 400 यूनिवर्सिटी सबको देगी, 50,000 डिग्री कॉलेजेस में सबको देना होगा। तो जो हमारे पास चांसलर थे उन्होंने कोशिश की, इंग्लैंड, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में जो हमारे ओल्ड बॉय है, जो फॉर्मर स्टूडेंट है, उससे अपील की। Thousands of smart classrooms they appeared. 4 लाख का वक्त आता था, 3.5-4 लाख। किसी ने 10 डोनेट किए, किसी ने 20, किसी ने 50। अब ऑलमोस्ट एवरी क्लासरूम हैज गॉट दिस गैजेट। तो आपके भी शहर में बहुत से ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो अच्छे काम करते हैं, उनको अप्रोच करें जो जरूरत है। गवर्नमेंट से भी कोशिश करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हर मसले का हल नहीं है। अपने रिसोर्सेस से, अपने वेल विशर से। पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पैसे के बगैर बहुत से काम नहीं हो पाते। तो जैसे आप अपने घर की फिक्र करते हैं, इसको साफ सुथरा रखने की, इसमें फैसिलिटीज लाने की, इसको आरामदेह बनाने की,
वही सोच आप अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में भी होना चाहिए। उतने ही फिक्र, उतने ही ख्याल अपने इंस्टीट्यूशन का भी रखें आप। तो ये 5 बातें आपसे पॉलिसी मेकर्स ने कही। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, इम्प्रूव करें, ताकि आपके स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हो, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो, वो मोटिवेटेड हो, इंस्पायर हो, वो रियल लाइफ में कुछ अचीव करें। दूसरी बात, आपका एटीट्यूड जो है विद इन द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम कैसा होना चाहिए? फुल ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग, appreciation for everyone, cutting across these narrow labels of caste, color, creed, race, religion, language, region. नेक्स्ट बात क्या कहेगी? डू इट विथ रिजोल्यूशन। जैसे धर्म के मामले में हम उसका पालन करते हैं, 1 इंच नहीं हटते, ऐसे ही एजुकेशनल एक्सीलेंस के मामले में कोई कंप्रोमाइज न करे, नो एग्रीमेंट, और फोकस क्लियर हो, गोल्स हमको मालूम होना चाहिए क्या करें। फाइनली बात हुई कि अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं, टॉप रैंक में लाएं। ये आपका अगर एज एकेडमिक लीडर आपका रोल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि आप इस रोल को फुलफिल करें, क्योंकि इसी से देश आगे बढ़ेगा। दिस इज व्हाट इज रियल नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग सिर्फ प्रधानमंत्री का काम नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं। नेशन तो क्लासरूम में बनती है, आप जैसे लोगों के विजन से बनती है, डेडिकेशन से बनती है। प्लीज टेक अप दिस नोबल वर्क। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुइज अशरफ साहब। और अगर कोई कमेंट हो, क्लैरिफिकेशन हो, ये 1-2 मिनट है तो बता दें। थैंक यू सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहूँगा, अगर उनके पास कोई क्वेरी है तो सर से पूछ सकते हैं। एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? लगता है कोई क्वेरी नहीं है सर। ओके फाइन, थैंक यू। जी सर। चलें, थैंक यू सर आपका इट वाज अ लेक्चर ग्रेट। बहुत ही अच्छा था सर, और हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला। और एज ए एकेडमिक टीचर तो हमें, हमारे लिए क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चैलेंजेस है, इस बारे में आपने बात की सर। आपकी वो बातें निमोनिक्स के बारे में मुझे याद आ रहा है कि मैं भी जब छोटा था तो बीबीसी लंदन में सुना था, वो 9 प्लैनेट्स हुए काउंट होते थे। तो उसको याद रखने के लिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स, इससे याद। तो ऐसे और भी बहुत सारे आपने बताया। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, ये साइन कॉस tan का फॉर्मूला है। इसी तरह से हम लोगों को बताया गया था, सम पीपल हैविंग कर्ली ब्लैक हेयर ट्राइंग प्रिपेयर ब्लैक, इस तरह का कुछ था। तो ये सब याद रखिए, सब
टूल्स है बच्चों को मतलब कि अपना तरफ ध्यान दिलाने के लिए या उनको याद कराने के लिए. That was Say. Now I'd like to invite Dr. S.M. Yahya Ibrahim sir to propose vote of thanks. कोई जरूरत नहीं है. सर बस 2 जुमले. चूंकि ये फॉर्मेलिटी है, एक तरह से मोई सर का हुक्म है, तो मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ. सर का तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, जितने भी हमारे साथी आज के इस वर्कशॉप में जुड़े हुए थे, आज के इस लेक्चर में जुड़े हुए थे, from the side of all these participants and also from the side of the joint organizers, that is Kareem City College and MMTC HRDC AMU Aligarh, we are extremely grateful to Professor Kidwai Saab for such a wonderful and such a खूबसूरत deliberation. सर से हम लोगों ने स्कूल अपने अपने यूनिवर्सिटी डेज में बायरन, शेले और मिल्टन पढ़ा था और रोमांटिसिज्म सीखा था. 24 और 30-35 सालों के बाद नाउ एक बार फिर से बहुत कुछ सीखने को मिला. The way we should interact with our students, the way we should communicate with our students, the way we are expected to behave as a leader, not simply as an educator only, as a nation builder. तो मैं सर एक दफा फिर से दिल की तमाम गहराइयों से आपका शुक्रिया जाती तौर पे भी अदा करता हूँ कि आपने हमारे टीचर्स की भी याद दिला दी सर, और आपके शेली के डेज और मिल्टन के डेज और आपकी वो तमाम क्लासेस भी याद आ गई, और फिर आपके वो खूबसूरत जो अल्फाज हुआ करते थे वो भी याद आ गए. इस वक्त मैं तमाम लोगों की तरफ से एक बार फिर से दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर. इंशाल्लाह वक्त रहा और मौका लगा तो फिर से दोबारा इंशाल्लाह आपको हम लोग सुनेंगे. Thank you so very much, sir. Thank you very much. You really made me humble. I feel humbled by your kind words. Thank you very much. Great. It was wonderful. Sheer delight. Oh. Yes, sir. मोहित सर. जी भाई जी. कल का क्या प्लान है आपका? कल कितने बजे आ रहे हैं? कॉलेज? हाँ हाँ. 11 बजे से रहेंगे. कल फ्राइडे है. हाँ लेकिन रहेंगे हम. है ना? ठीक है, तो कल हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे. ठीक. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.